Hello students, we continue our chapter that is partnership fundamental. Today we discuss a very easy topic that is P&L appropriation account. In this video we learn when we prepare P&L appropriation account, why we prepare and how it is to be prepared. So let's start. Final accounts of partnership firm. Students, you all are well aware about the final accounts of sole proprietorship business. This is in your 11th class, where we prepare trading account, P&L account and balance sheet. Because of single ownership, we directly transfer the net profit to capital account. But in case of partnership, number of owners are more, that is up to 50. So we cannot directly transfer the net profit to partners' capital account. We have to do some adjustments after calculating the net profit. So we need to open two more accounts in partnership. Trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, partners capital account, and last one is balance sheet. Trading account is used to find out gross profit or gross loss, and this gross profit and gross loss is transferred to profit and loss appropriation account, and profit and loss appropriation account is used to calculate net profit or net loss. Then why we not distribute the profit in P&L account? Students, there is one chapter in your 11th class, that is provision and reserve. Provision is charge against profit, whereas reserve is appropriation of profit. So P&L appropriation is extended form of P&L account. Items which are charged against profit we show in the P&L account. After charging, the balance in the P&L account is used for appropriation, that is for distribution. We transfer net profit from P&L account to P&L appropriation account. This profit is profit before appropriation. हमारा P&L appropriation start कहाँ से होगा? Profit before appropriation amount से. P&L appropriation account के थ्रू हम profit partners में distribute करेंगे in the form of interest on capital, salary, remuneration, any bonus to a partner, any commission to a partner, or we can create a reserve from it because reserve is the part of appropriation. But there is one income which is taken from the partner, that is interest on drawing. So interest on drawing is the only income which is credited to the P&L appropriation account. And finally हम क्लोजिंग बैलेंस जो भी P&L appropriation का होगा वो हमारे लिए कौन सा बैलेंस होगा? डिविजिबल प्रॉफिट. ये हम क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली? बिकॉज स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द पार्टनर्स आर मोर and it is difficult to do all the adjustments in the balance sheet related to partners. We prepare a partners capital account separately and do all the adjustments related to the partners in partners capital account, and finally close the partners capital account with the balance CD, and this balance CD is transferred to the balance sheet. I think you are very clear from this. Next is definition of P&L appropriation account. P&L appropriation account is prepared to distribute profit and loss among the partners. That's why the word appropriation meaning is distribution. And what we are distributing? Profit or loss in between partners. Certain adjustments such as interest on drawing, interest on capital, salary to the partners, any commission to partners are done through the P&L appropriation account. And the balancing figure of the profit and loss appropriation accounts is to be distributed among the partners in profit sharing ratio. Clear? And then we discuss general entries related to the P&L appropriation account. First entry is for transfer of net profit. P&L account debit to P&L appropriation. This entry becomes reverse if there is a net loss to firm. Second transaction, for allowing the interest on capital. Interest on capital is an expense for a business, that's why it is debited. Interest on capital account debit to partners capital. And how to close this account interest on capital? It is debited to the P&L appropriation. So our entry is P&L appropriation account debit to interest on capital. Next one,
for allowing the salary, commission, bonus to a partner. These all are expenses for a business. So partner salary account debit, commission account debit, bonus account debit to partners capital. And how to close these expenses? By using P&L appropriation account. So closing entry of this P&L appropriation account debit to partner salary, commission, bonus. Next is for creating reserve. How to create reserve? In 11th class we create the reserve from P&L account, but here we have one more account, that is P&L appropriation account. So our entry in this chapter, P&L appropriation account debit to reserve. Fifth one, for charging interest on drawing. Interest on drawing is charged from the owner, and this is the income of the business, which is only income which is shown in the P&L appropriation account. So partners capital account debited to interest on drawing, and interest on drawing account is closed from P&L appropriation account, that is interest on drawing account debit to P&L appropriation. For balancing figure transferred to the partners capital account, either it is a divisible profit or divisible loss. So sixth entry is for the profit transferred to the partners capital account from P&L appropriation account. If there is a profit in P&L appropriation account, then your entry is P&L appropriation account debit to partners capital account. If there is a divisible loss, then your entry is partners capital account debit to P&L appropriation account. And the last 7 entry is not related to P&L appropriation, but it is very important for you. For interest due on partner's loan, you know what is the rate of interest on loan? That is 6% per annum. Okay. Here in this case, we treat a partner as a third party. So interest on partner's loan is a charge against profit, not appropriation of profit. यहाँ पर हमें पार्टनर ने हेल्प प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ लोन। अदरवाइज अगर यही लोन हम बैंक से लेते तो हमें वहाँ पर भी इंटरेस्ट पे करना होता। तो ये जो इंटरेस्ट आप पार्टनर्स लोन पे हम बिजनेस पे कर रहा है, दिस इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये कहाँ से होगा? वापस चार्ज P&L अकाउंट से। सो फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स लोन, योर एंट्री इज interest on partners loan account debit to partners loan, and for transfer of the disinterest on partners loan, that is to the P&L account, then P&L account debit to partners loan account. Okay, so next is format of profit and loss appropriation account. Students, हमें यहाँ पर फॉर्मेट को डीपली डिस्कस करना है। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट अगर P&L के थ्रू हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास एंट्री क्या बन के आएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। सपोज इफ देयर इज अ नेट लॉस इन P&L अकाउंट, वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या एंट्री बन जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और ये जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा? बिफोर एप्रोप्रिएशन। इट मीन्स आफ्टर चार्ज। जो कुछ भी हमें चार्ज करना था P&L अकाउंट में वो हमने चार्ज कर दिया है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट यहाँ आ रहा है, इस प्रॉफिट को आप क्या बोलोगे? बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर चार्ज। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप डेबिट में देखिए सारे एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ पार्टनर से ही रिलेटेड हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, सैलरी कमीशन ये भी पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, जनरल रिजर्व मैंने अभी लास्ट एंट्री की थी कि हमें जनरल रिजर्व कहाँ से इस बार बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। दिस ऑल आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में देखिए ओनली आपके पास सिंगल इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइदर इट इज़ अ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। सपोज अगर आपके पास ये डिविजिबल प्रॉफिट हुआ तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये डिविजिबल लॉस हुआ उस केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, एंड इन लास्ट सम इम्पोर्टेंट नोट्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जहाँ पर ये दोनों आइटम्स आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट, उस केस के अंदर हम पार्टनर को थर्ड पार्टी ट्रीट करके इन दोनों को P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट नो डाउट ये पार्टनर को मिल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, अदरवाइज हमें ये P&L एप्रोप्रिएशन में शो करना होता।
but here we treat both these items as a charge against profit. That's why we debited it to a P&L account. Next, when available profit is less than appropriation, then अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट बहुत कम है और पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन वो अवेलेबल प्रॉफिट से भी ज़्यादा आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो, दैट इज़ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इस केस के अंदर क्या होगा, जहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट इज़ नॉट इनफ, उसके अंदर हम P&L रेशियो यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, और जो अवेलेबल प्रॉफिट है दिस इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो, दैट इज़ द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। उस कंडीशन में क्या होगा, हम वहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर को, सपोज सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कमीशन करना है, या फिर IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वहाँ पर हम सेपरेटली वर्किंग नोट में ABC सब पार्टनर्स को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करके उनका जो भी टोटल अमाउंट उनके पास जाना चाहिए उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। फिर हमारे पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस केस के अंदर हमारे पास P&L रेशियो का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द नेट प्रॉफिट इज़ गिवन आफ्टर चार्जिंग और डेबिटिंग एनी आइटम रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन। आई एम रीडिंग वंस अगेन, इफ़ द नेट प्रॉफिट इज़ गिवन, अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर चार्ज और डेबिट के P&L एप्रोप्रिएशन में, और हमें वहाँ पर क्या चाहिए, बिफोर चार्जिंग, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वापस हम उस आइटम को ऐड करेंगे। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी रुपीज दिस, then this is the part of the appropriation. Why you charge from P&L account? We again add back that salary to net profit, and that amount is used as a profit before appropriation. फिर वही सैलरी हम वापस देंगे P&L appropriation के थ्रू। ओके, then next, if the net profit is given before charging or debiting any item related to profit and loss account, then we have to calculate the net profit after charging against that profit by subtracting the amount related to profit and loss. Suppose reverse case, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको अमाउंट गिवन है बट एक ऐसा आइटम से उन्होंने चार्ज नहीं किया, सपोज ऑफिस एक्सपेंसेस, आपको अमाउंट गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफिस एक्सपेंसेस इज रुपीज दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी नेट प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से ऑफिस एक्सपेंसेस लेस करके फिर हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन। आई थिंक मुझे वापस से स्पीडली एक बार रिवाइज करना चाहिए। सो वी स्टार्ट रिवाइज। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। थ्रू आउट दिस वीडियो हमने कहीं पर भी पार्टनर्स करंट अकाउंट को डिस्कस नहीं किया है, इसका टॉपिक सेपरेट है और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, P&L अकाउंट में। फिर हमने P&L अकाउंट के थ्रू क्या कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट फिर हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उनको क्लोज करके उनका बैलेंस फाइंड आउट करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। द नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेफिनेशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। Certain adjustments such as interest on capital, interest on drawing, salary to partners or any commission to partners are done through profit and loss appropriation account. And balancing figure of the profit and loss appropriation account is to be distributed among the partners in P&L ratio. Then the first entry for transfer of net profit, that is P&L account debit to P&L appropriation. Suppose if there is a net loss, then we have to pass the reverse entry of it. Next, for allowing the interest on capital account debit to partners capital.
For close the interest on capital account, that is P&L appropriation account debit to interest on capital. For allowing the salary, commission, bonus to a partner, then partner salary or a commission or a bonus account debit to partner's capital or current account. For closing the salary or commission or bonus to a partner, that is a P&L appropriation account debit to partners commission, salary and bonus. The next is for creating the reserve, P&L appropriation account debit to general reserve or reserve account. Next is for charging interest on drawing, partners capital account debit to interest on drawing. For close the interest on drawing account, interest on drawing account debit to P&L appropriation account. Next, for profit transfer to partners capital account, P&L appropriation account debit to partners capital account. For loss transfer to the partners capital account, partners capital account debit to P&L appropriation. And the last one is for interest due on partners loan, interest on partners loan account debit to partners loan. For transferring the interest on partners loan, P&L account debit to interest on partners loan. Then format of the P&L appropriation account. Here this is the format we already discussed. Firstly we start from the net profit or net loss and we debited all the appropriation which is between among the partners and close it by the partners capital account through P&L ratio. Then the next are notes. First note, interest on partners loan and rent paid to a partner is to be treated as charge against profit. Next, when available profit is less than appropriation, in that case we have to calculate the ratio of appropriation. If the net profit is given after charging or debiting any item related to appropriation, we have to calculate the net profit before appropriation. That's why by adding back the amount related to the appropriation account. And the last one, if the net profit is given before charging or debiting any item related to the profit and loss account, then we have to calculate the net profit after charge against profit by subtracting related amount to profit and loss accounts. That's all for today. So students, thank you. You have to revise and do the practice.